अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पहले आप लोगों के साथ पीपीएससी में जो डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स अनाउंस हुई हैं और अभी उनका अप्लाइंग प्रोसीजर चल रहा है, उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और उसके बाद डिप्टी अकाउंटेंट के लिए इस्लामियात के कुरान से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं उनको पढ़ेंगे। और इसी तरह से हम डेली बेसिस पर जनरल नॉलेज में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड MCQs को पढ़ा करेंगे। अच्छा जी, डिप्टी अकाउंटेंट की टोटल 60 सीट्स अनाउंस हुई हैं पीपीएससी की तरफ से, जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है। अप्लाई करने की इनमें जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए है सिंपल बैचलर्स आपने किया हुआ हो किसी भी डिग्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जनरल क्वालिफ़िकेशन है इसकी। बैचलर्स आपने किया हुआ है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो ये टोटली जीके बेस्ड एग्ज़ाम है। 100 मार्क्स के MCQs होंगे जो सारे जनरल नॉलेज के पोर्शन से आएंगे। वैसे ये डिप्टी अकाउंटेंट की सीट ऐसी है कि नाम से यही ज़ाहिर होता है कि इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिट वगैरह से पेपर में कुछ पोर्शन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपीएससी की तरफ से जो इसका सिलेबस है वो 100% जीके है। अच्छा जी, पीपीएससी ने डिप्टी अकाउंटेंट की 60 सीट्स अनाउंस की हैं और लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 15 जून 2026 है। अभी जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसमें 21,600 स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। और अब जो रिमेनिंग डेज़ हैं इनमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेंट्स आखिरी दिनों में अप्लाई करते हैं। अब अगर इस पेपर की मेरिट की अगर हम बात करें तो इसका मेरिट हाई रहेगा। ऑल्दो की सीट्स इसकी अच्छी हैं, 60 सीट्स हैं, लेकिन अगर आप इसका पेपर देखें तो ये सारा जीके बेस्ड है। 70 से नीचे इसका मेरिट तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इस पेपर की ऐसी तैयारी करें कि मैक्सिमम आप इसमें 85 से 86 मार्क्स ले सकें। अगर आप मैक्सिमम टारगेट अपना इतना रखेंगे तो आप मेरिट पर आ जाएंगे। मैक्सिमम टारगेट इस जॉब में आपने कभी भी 65 से 70 तक नहीं रखना है, बल्कि 85 तक रखना है। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को डिज़ाइन करें। इसमें आपने जीके का जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करना है, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, देन जियोग्राफ़ी है, जनरल साइंस है। जियोग्राफ़ी पाकिस्तान की और वर्ल्ड दोनों की करनी है। उसके बाद इसमें कंप्यूटर है आपके पास, इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू का सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश। तो इन तमाम पोर्शन से पेपर आएगा। ये मैटर नहीं करता कि किस सब्जेक्ट से कितने MCQs आएंगे, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को एज अ होल कंप्लीट प्रिपेयर करना है। अब वो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ ले और किस पोर्शन के ज़्यादा MCQs आएँ। अगर आप इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू और मैथ्स इन सब्जेक्ट्स को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स ज़्यादा लैग करते हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वो इंग्लिश के MCQs में, देन कंप्यूटर, मैथ्स एंड उर्दू के MCQs में। इसलिए जब आपको पता हो कि कौन से एरियाज़ में आप वीक हैं तो उन पर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उन्हीं को पॉलिश करते रहें जो एरियाज़ आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये वेरी भी कर सकता है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जियोग्राफ़ी के पोर्शन में अच्छे ना हों, कुछ को पाकिस्तान स्टडीज़ का जो
ہسٹوریکل پورشن ہے وہ اتنا اچھا نہ آتا ہو تو آپ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کس پورشن میں آپ زیادہ ویک ہیں، اس کو زیادہ ٹائم ایلوکیٹ کریں۔ جب بھی کسی ایگزام میں آپ نے اپنی سکسیس کو میکسیمائز کرنا ہو تو اس کے لیے آپ پورا پلان بناتے ہیں، اپنے جو اسٹرانگ ایریاز ہیں ان کو ایک سائڈ پر لکھتے ہیں اور دوسری سائڈ پر آپ اپنے جو ویک ایریاز ہیں، جن سبجیکٹس میں آپ ویک ہیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے لیے سلیبس کے اکارڈنگ کمپلیٹ نوٹس چاہیے ہوں ایم سی کیوز کی فارم میں، جس کے ساتھ پاس پیپرز بھی شامل ہوں، تو جو واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر کانٹیکٹ کر کے سیمپل دیکھ کر نوٹس لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ہی سر آپ کو سیمپل اور جو پیمنٹ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ آج ہم نے اسلامک اسٹڈیز کے ایم سی کیوز پڑھنے ہیں موسٹ امپورٹنٹ اور قرآن سے ریلیٹڈ، سو 100 ایم سی کیوز ہم پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے صرف وہ ایم سی کیوز اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا ہے جس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم بعد آپ کو بھول سکتا ہے۔ باقی ایم سی کیوز آپ نے نوٹ ڈاؤن نہیں کرنے تاکہ اینڈ ٹائم پر آپ صرف انہی ایم سی کیوز کو ریوائز کر سکیں اور وہ پیپر میں آپ کو یاد رہیں۔ شارٹ نوٹس یا ہینڈ ریٹن نوٹس جب آپ اپنے لیے بناتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو بھی ایم سی کیوز پڑھنا ہے اس کو لکھتے جانا ہے۔ ایک تو وہ بہت زیادہ لینتھی بنتے ہیں، دوسرا اینڈ ٹائم پر وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے کیونکہ اتنا زیادہ لکھا ہوا آپ کیسے ریوائز کریں گے۔ اسمارٹ اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ آپ صرف انہی ایم سی کیوز کو اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کریں جو کچھ ٹائم بعد آپ کو بھول جاتے ہیں۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ون ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس، دی ورڈ قرآن مینس دیٹ وچ از ریڈ اور ٹو ریڈ۔ The total number of surahs in the Quran is 114. Number of verses or ayat in the Quran is 6666. Total number of manzils in Quran 7. Total number of paras in Quran 30. Total number of rukus in Quran 540. The longest surah of the Quran is Surah Baqarah. Shortest surah of the Quran Surah Kausar. Longest verse in the Quran is Ayatul Kursi. The surah known as the heart of Quran, Surah Yasin. The surah known as beauty of Quran, Surah Ar-Rahman. The only surah that does not start with Bismillah, Surah Tawbah. The surah that contains Bismillah twice is Surah Namal. Total number of Makki surahs are 86. And total number of Madni surahs are 28. And how many surahs are in total? 114. How many surahs start with word kul? 5. The number of surahs starting with abbreviated letters or muqatta'at 29. The name of Quran mentioned in Quran is 55 times. First Wahi was revealed in the cave of Hira. The Prophet's age at the time of first Wahi was 40 years. The angel who brought the Wahi, Hazrat Jibrail alayhi salam. Total duration of the revelation of Quran 22 years, 5 months, 14 days. First verse revealed Surah Alaq 1 to 5. Last verse revealed Surah Maida. Who proposed the compilation of Quran? Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. Who was assigned the task of compiling the Quran? Hazrat Zaid bin Sabit Raziyallahu Ta'ala Anhu. Who is called Jami Quran? Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu. First female Hafiz of Quran, Hazrat Hafsa Raziyallahu Ta'ala Anha. Number of prophets mentioned in the Quran 25. The prophet mentioned most frequently in the Quran, Hazrat Musa alayhi salam. How many times is the name Muhammad, peace be upon him, mentioned? 4 times. How many times is the name Ahmad mentioned in Quran? 1 time. Which surah is called Ummul Kitab? Surah Fatiha.
Total number of sajdas in Quran 14. First sajda in the Quran occurs in Surah Al-A'raf. Total number of words in the Quran 77439. Total number of letters in the Quran 323671. Which surah mentions the story of the seven sleepers? Surah Al-Kahf. Which surah mentions the stories of Hazrat Musa alayhi salam and Khizr alayhi salam? Surah Kahf. The surah that mentions the Zulkarnain? Surah Kahf. The surah that mentions the name of the Prophet peace be upon him? Surah Fatah. The surah that mentions Battle of Badr? Surah Anfal. The surah that mentions the Treaty of Hudaybiyah? Surah Fatah. The surah that discusses the laws of inheritance? Surah An-Nisa. The surah that discusses the laws of marriage and divorce? Surah At-Talaq. Surah that discusses the laws of orphans? Surah An-Nisa. How many times is the word Allah mentioned in the Quran? 2698. Which surah is called Mother of the Quran? Surah Fatiha. The Quran is divided into how many parts regarding revelation? Makki and Madni. What is the meaning of ayat? Sign or evidence. What is the meaning of the surah? Chapter or row. The Quranic term for the science of recitation? Tajweed. Quranic term for the explanation? Tafsir. The first complete surah revealed? Surah Fatiha. The surah that narrates the event of Isra and Miraj? Surah Al-Isra. Surah that narrates the creation of man? Surah Al-Mu'minun. Surah that mentions the miracle of splitting the moon? Surah Qamar. Surah that deals with the day of judgment in detail? Surah Qiyamah. How many verses are there in Surah Al-Fatiha? 7. Which surah is equivalent to 1/3 of the Quran? Surah Al-Ikhlas. Which surah is equivalent to 1/4 of the Quran? Surah Al-Kafirun. Which surah is equivalent to 1/2 of the Quran? Surah Al-Zilzala. Surah that mentions the laws of food and drink? Surah Maida. Surah that talks about the night of power? Laylatul Qadr. Surah Al-Qadr. Surah that talks about the day of judgment? Surah Al-Qariya. Surah that warns about backbiting? Surah Al-Humaza. Surah that warns against greed? Surah At-Takasur. Surah that emphasizes the passage of time? Surah Al-Asr. The surah that mentions the birth of Hazrat Isa alayhi salam? Surah Maryam. Surah named after a prophet? Surah Ibrahim, Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah Nuh and Surah Muhammad. The surah that mentions the migration of the Prophet peace be upon him? Surah Al-Anfal. The surah that mentions the constitution of Medina? Surah Al-Imran. Which surah was revealed in response to the hypocrites? Surah Al-Munafiqun. Which surah discusses the story of the people of cave? Surah Al-Kahf. The surah that deals with the battle of Trench or Khandak? Surah Al-Ahzab. The surah that deals with the conquest of Makkah? Surah An-Nasr. The surah that deals with the punishment of Abu Lahab? Surah Lahab. The surah that deals with the oneness of God? Surah Al-Ikhlas. The surah that deals with the protection from evil? Surah Falaq and Surah Nas. How many times zakat is mentioned with salat in the Quran? 26 times. Which surah is known as the Great News? Surah An-Naba. Which surah is known as striking event? Surah Al-Waqia.
Which surah is known as Kingdom? Surah Al-Mulk. Which surah is known as the Pen? Surah Al-Qalam. Surah known as Star? Surah An-Najm. Which surah is known as Moon? Surah Al-Qamar. Surah known as the Iron? Surah Al-Hadid. Surah known as Spider? Surah Al-Ankabut. Surah known as Ants? Surah Namal. Which surah is known as Bees? Surah An-Nahl. Which surah is known as the Cow? Surah Al-Baqarah. اب یہاں پر یہ جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں نا، جیسے سورہ النجم ہے، تو یہاں پر نجم کا مطلب ہے سٹار. اس وجہ سے ان سوراز کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں عنکبوت، اس کا میننگ ہے اسپائڈر. نمل، اس کا میننگ ہے آنٹس. سورہ النحل، نحل کا مطلب ہے بیز. اب یہاں پر ہے سورہ بقرہ، بقرہ کا میننگ ہوتا ہے کاؤ. Then which surah is known as the family of Imran? Surah Al-Imran. Which surah is known as the woman? Surah An-Nisa. Surah known as table spread? Surah Al-Ma'idah. Surah known as the cattle? Surah Al-An'am. Which surah is known as heights? Surah Al-Araf. Which surah is known as spoils of war? Surah Al-Anfal. Which surah is known as repentance? Surah Tawbah. Which surah is known as thunder? Surah Ar-Ra'd. Which surah is known as the mount? Surah At-Tur.